बट लेट्स से कंसीडरिंग द मार्केट वोलेटिलिटी, जो एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है, तो उनको आप एडवाइस करोगे टू आल्सो डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो इन म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, जो भी अभी पोर्टफोलियो ड्रॉ डाउन हो रहा है उनका, तो व्हाट इज लाइक अ वे टू मिटिगेट दिस रिस्क और वोलेटिलिटी? So 100%. In fact, I'm a admirer of index investing. और अभी आप देखो, अभी मैंने बोला कि सिस्टम्स में चीज़ें नहीं आ रही है। आप अगर इस मार्केट का करेक्शन भी देखो, इंडेक्स लेवल पे मार्केट दिसंबर में टॉप आउट हुआ, पोर्टफोलियोज अक्टूबर से खराब होने शुरू हो गए। सो इंडेक्स थोड़ा हमेशा लेट रिएक्ट करता है, बिकॉज इंडेक्स इज अ वेटेड कॉन्सेप्ट। अगर आप निफ्टी 50 भी देखोगे तो उसमें जो टॉप 10 स्टॉक है उसका वेटेड ज़्यादा है, पोर्टफोलियोज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सो इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज वन वे टू हेज दीज टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम टॉप्स एंड बॉटम। जैसे मैंने बोला, अभी मेरे पास आइडिया नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? वन ऑफ द वेज आई कैन डू इज, निफ्टी में अभी 17% का करेक्शन हुआ है और स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी 27% का करेक्शन हुआ है। इफ यू रिमूव 2008 एंड 2020, 27 to 30% is like the top correction of top second or top third correction of Nifty. And 18p is a very, very attractive p. Whenever market of Nifty goes to 17, 18p, the future return has been very, very good. Right now we are 17% correction and we are almost hitting less than 20p. So worst case scenarios, यहाँ से 10% और करेक्ट हो सकता है। मैं स्टॉक उठाऊं, वो 30% और करेक्ट हो जाए, उससे तो बेटर है कि आई हाइड इन निफ्टी, बिकॉज आई नो द वर्स्ट इन निफ्टी इज राइट नाउ 10% मोर करेक्शन। वहां भी इफ यू डिवाइड द मनी इन 3-4 ट्रांचेस एंड यू डू ट्रांच बाय बेस्ड इन्वेस्टिंग, योर एवरेज लॉस इज गोइंग टू बी 3-4%। एंड देन व्हेन द मार्केट रिकवर्स, देन स्टॉक्स विल स्टार्ट कमिंग इन द सिस्टम। बट वो जब तक सिस्टम में आएगा तब तक मार्केट, सी ट्रेडर्स वेट करते हैं। ट्रेडर्स पहले दिन से नहीं घुसते हैं, ट्रेडर्स वेट करते हैं, वो हेल्दी इन्वायरमेंट देखते हैं। फंडामेंटल वाले अपने कन्विक्शन पे घुसते हैं और वो करेक्शन भी देखते हैं। सबका अलग अलग गेम है। तो मे बी पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो, इफ आई एम हैविंग कैश, आई विल पुट इन अ निफ्टी बीज। मे बी जब मार्केट घूम जाएगा उसमें 3-4% का रिटर्न बनेगा, बट मे बी बाई दैट टाइम some stocks will start hitting my system. I will start putting. So abhi maybe I am putting 1%, 2% based on whatever conviction I discussed. But the bigger money I will keep taking it out of Nifty, keep putting there. So this is how I think we should. I mean, this is one of the ways I use index investing. The other ways, it's easier to enter or exit out of ETFs. So even if you have built a system where you have 7-8 ETFs, because हर साल हर सेक्टर अच्छा नहीं करता। Some years IT does well, some years bank do well, some years Nifty does well, some years small cap does well. If you are able to build a model around 5-6 indices, I'm talking because I have done these things, you rotate the money just at an indices level, your overall volatility than doing a direct stock is much lesser. And if you are a great investor anyway, आप वहाँ भी पैसे बनाओगे. But if you are still in your learning phase, you have not cracked everything, you can still make a decent more than Nifty or more than small cap return by just managing the entry and exits. So आप small cap की पूरी volatility से बच जाओ और उसका भी कुछ अच्छा निचोड़ लो, निफ्टी का भी अच्छा निचोड़ लो. I mean, building those kind of momentum system. There is a book on dual momentum and all. You can read if you want to build these kind of quant system. You can do that. So on 15-20% of my portfolio, I do these things depending on kind of market corrections. But for somebody who is not a direct stock investor or he doesn't have time to do it, I think these are tools and ways where he can have a little more bigger allocation and look for these kind of strategies. What are your what are your learning resources? What kind of newsletters, books, podcasts do you follow? I'll tell you, between 2010 to 20, मैं बहुत पढ़ता था. So at least 4-5 investment books on fundamental, technical, market cycle, fraud, I read. जितने भी पॉपुलर इन्वेस्टर हैं सबका वीडियो, सब कुछ देखा, सब कुछ किया. द थिंग इज, देर इज अ फेज ऑफ रीडिंग एंड देर इज अ फेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग. रीडिंग आप इसलिए करते हो क्योंकि आप खुद को खोजते हो. सो 20 तरह के स्टाइल है इन्वेस्टिंग के. इफ यू सी आरजे सर, इफ यू सी मधुसूदन केला सर, हर किसी का अपना अपना, एवरीबडी इज डिफरेंट. सो वी यू रीड ऑल ऑफ दैट सो दैट you understand their different style and then you see where you are good at. For me, that phase, that time it was 80% reading and 20% implementation. Last 4-5 years, I have been 20% reading, 80% implement. That is how I've been able to build these tools and all.
So अभी क्या है कि अभी मैं अपने again I will tell, I have 4-5 investors, big investors whom I follow closely. I have 4-5 friends with whom I interact. Books, rather than reading new books, I read the same old book again. Which are some books that you recommend? Like if I talk of fundamental, there is a book called The 5 Rules of Successful Investing. There is a book called Market Cycle called Capital Return. On technical, the CMT Level 1 book. There is a book by John Murphy on technical analysis of fundamental market. So new books I read more on sectors to understand a sector well, to build a sectoral understanding. Those kind of things. I like there are books which have come on Ozempic drug and all of that which is happening. These are the disruptions. So this is where I like to read new books. But for my foundation, either I will read the same old book because there is a incremental knowledge, but I spend my time more on implementing and building and seeing what is working and what is not working. So I read less, and a close circle which I have identified in last 10 years, that okay, this is the person I want to follow, this is the newsletter I want to follow, but I spend more time on implementing and learning through those implementations of reading. And any newsletters, any podcasts? So see, it's not like for everything I watch all the episodes. So as I said, if on your channel there is a person who is coming whom I follow, then I will see that. So like I'll tell you, Malabar Capital, uh, if he comes, in fact पहले वो बहुत ज़्यादा आते थे, आजकल उनका आना कम हो गया है. तो अभी बहुत दिन के बाद उनका एक इंटरव्यू आया था सुमित नागर का. I ensured I see it. So that is way. So I don't watch everything of everything, but these are the 8 or 10 people. When they come somewhere, I ensure that I go and I follow that. Or if I am interested in a topic, like let's say abhi, as I said, why am I interested in Ozempic? Because that is a big disruption, that's a change which is happening. So if there is somebody who is a very commendable name in that space, when he is speaking about it, then I will go and see. और इफ somebody has done a webinar on a sector or a YouTube पे एक sector का बहुत अच्छा analysis है, and I don't know that sector, then I will go and I will see that. So that is how I try to learn. So yeah, I read, or I mean अब तो visually देखना भी reading, it's a part of reading, पहले नहीं था, because you are learning out of it. So मैं कोई भी कंपनी एनालाइज करता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं जाके उसका पूरा वैल्यू पिकर का थ्रेड पढ़ता हूँ. उसमें 50 पोस्ट भी हो सकता है, 1000 पोस्ट भी हो सकता है. आई इंश्योर आई रीड एवरीथिंग. And if anybody has made a good YouTube video, so again I follow some 5-6 people जो stock analysis करते हैं. I ensure कि उन्होंने वो वीडियो बनाया मैं देखूं. So that is how my research starts, because I am able to leverage on their learnings. Then I will have some initial perspective. Then I will put my own perspective. But हाँ, books पढ़ना, foundation पढ़ना बहुत ज़्यादा मैं नहीं करता अब. I'm more driven by systems. Even for idea generation, I'm more and more getting driven more by my system rather than trying to go and find idea in the market. Got it. Network for me is a validation of what is coming in the system. I'll give you one example. There is a stock called Walkhart. It doesn't have a very good history. And this stock came in my system and I just ignored it because एक तो pharma, complicated business, कोई history नहीं है. मुझे लगा क्या होगा. 2 friends of mine did work and they went very bullish on it. So because system में आया था, the moment they spoke about that stock, I was like, okay, it hit my system. Because उस stock में पास देखोगे तो कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे, और जो फ्यूचर था वो मैंने पढ़ा नहीं. वो अगर वो नेटवर्क नहीं होता ना, तो वो आइडिया सिस्टम में आया और मैं जाने देता, कुछ नहीं करता. Because network में validate हो गया, I could act on it. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.